नारायणीयं पञ्चमस्कन्धपरिच्छेदः अध्याय 20 वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् उपजातिः। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतादाग्निद्रराजादुदितो हिनाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्म हंसाय नमः। अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञा स्वतुल्यं सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणस्थिरो ददा बर्हिषि विश्वमूर्ते सुपर्णाय नमः। नाभिप्रियायामतमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरुषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावा प्रभाविता शेषजनप्रमोदः भुजगोत्तमाय नमः। त्वयि त्रिलोकीभृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदं ते हिरण्यनाभाय नमः। इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षाद्ववर्ष नास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद्व्यदधासु वर्षं सुतपसे नमः। जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्ती मतोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनत्तत्र शतं तनूजानेषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा पद्मनाभाय नमः। नवाभवन् योगिवरानवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्रास्तपो बलाद् भूसुरभूयमीयुः प्रजापतये नमः। उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिमधा जडोन्मत्तपिशाचर्याम् अमृत्यवे नमः। परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः सर्वदृशे नमः। शयूरतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्घकुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुर्वातनाथ सिंहाय नमः। इति 20 दशकं समाप्तं। नारायण 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 नारायण।